आज आम फाइलेरियासिस विषय डिस्कसन करवा। व्हाट इज फाइलेरियासिस? फाइलेरियासिस ए parasitic disease transmitted by black flies and mosquitoes. These parasites are thin, round, patala, goal, worm-like poko bhaliya organism. They appear white or translucent when observed under a microscope. Microscope तले पूरा धला देखा जिवो, translucent देखा जिवो. The lifespan of filaria would be around 5 to 7 years. 5 ରୁ 7 ବର୍ଷ. During their lifespan, they produce millions of larvae. Then the size of the female is between 250 to 300 micrometer long, and the size of the males is roughly half as long as the female. तुम सदा जानछो female अपेक्षा male टा सदा छोट होबो. तेनु how is filariasis transmitted? The causative organism for filariasis is a roundworm of the Filariidae type. However, this is a vector-borne disease with the primary vectors being mosquitoes and black flies. Primary vector किए? Mosquitoes or black flies. The infection spread when a mosquito bites an already infected individual and then goes on to bite a healthy person. गोटे already infected individual को mosquito bite करिवो, से carry करिक आनला, तापर गोटे नॉर्मल लोक को से कौन करिवो infected कर दबो, गोटे healthy person को मध्य infected कर दबो. This causes the larvae of this parasite to enter the bloodstream of the healthy host and multiply. तेणु healthy host रो bloodstream को से तरह entry करिवो, सेठी से तार multiplication आरंभ कर दबो, reproduction तार चलिवो. The complete stage of the larvae to adult filarial worm is carried out within the lymphatic system. ये जो total system टा होची, हमरा lymphatic system रे होची. Once matured, the adult filarial worm starts to release larva forms called microfilariae. तेणु filarial worm रो larva को कहते microfilariae. The newly generated microfilariae again enter into the mosquito along with the host blood, and the cycle repeats itself. The cycle टा एमती continue चलिवो. This parasitic disease is categorized on the basis of which body part is infected. तो बर्तमान देखिए पड़ो बॉडी रो को पार्ट टा अफेक्ट होची. जदि lymphatic filariasis होची, as the name suggests, this type affects the lymphatic system. माने lymphatic system को अफेक्ट करूची. Subcutaneous filariasis ता माने in this case the bottom layer of the skin रो तळ लेयर टा subcutaneous layer जोटा कहूचे, and white part of the eye, आखि रे जोटा white part सेटा मध्ये अफेक्ट हो, are infected by the worms. अच्छा, serous cavity filariasis रे कोन होची? In the case of this disorder, the serous cavity of the abdomen is infected. Abdomen रो serous cavity टा infected होची. So there are more than 100 species of filarial worms currently discovered. Among them, only 8 to 9 are categorized as filarial parasite, which causes infection in human being. तो बर्तमान देखो एटा तुम देखौची filarial लाइफ साइकिल टा केमिति एटा देखि परथुवो. उचेरिया बैंक्रप्टी तो केमिति तार दीटा होस्ट रे ह्यूमन स्टेज आउ तापर एडल्ट्स इन लिम्फोसाइट्स सेकेंड रे आसिला. फर्स्ट रे मस्किटो टेक्स ए ब्लड मिल्क, तापर सेटा ह्यूमन स्टेज रे कोन होची एडल्ट्स इन लिम्फाटिक्स. तापर तीन रे होची एडल्ट्स प्रोड्यूस्ड सीज्ड माइक्रोफाइलरी दैट माइग्रेट इनटू लिम्फ एंड ब्लड चैनल्स. फोर्थ रे कोन होची ना मस्किटो टेक्स ए ब्लड मिल्क, देखो कोटू कोटू नौची रक्त हैला. तापर 5 रे होची कोन ना माइक्रोफाइलरी sealed sheath penetrate mosquito midgut and migrate to thoracic muscle. तापर L1 larvae तापर L3 larvae larvar form देखो धीरे धीरे ग्रो करूची. 8 नंबर देला migrate to head and mosquitoes proboscis हैला. एई बळे बारे ता लाइफ साइकिल टा कंप्लीट होची. तो filarial symptoms कोन ना the general filariasis symptoms during its early stage include fever, chills, headache हैला, ज्वर हबो, तुम से कंप हबो, मुंड बिंदिबो. Skin lesions are observed in the beginning stage. That means between 3 months to 9 months after the insect bite. Insect bite करिवार 3 मास और 9 मास भीतर skin lesion हबो हैला. The filariasis symptoms seen in the later stage include blockage in the lymphatic system which leads to edema हबो, swelling, redness and pain in the arms and legs. Arms और legs तुमर कोन बना swelling हबो, फुलिबो, लाल पड़िबो, विंधा हबो. accumulation of pus in cells, पुज्ज जमिबो. So the formation of pus in a cell due to the dying worms or a secondary bacterial infection results in. तो जो worm गुड़ा मरी जाती कि जो secondary bacterial infection जो तुम्हारा cell रे pus हुए. Skin rashes हैला, skin पूरा rash करी जीवो, पूरा नाली नाली फड़ी जीवो, abdominal pain, पेटो काटिबो. Damage to the cornea, cornea भी damage हबो हैला. Choroid rectal जोटा आखि रे infection होउची जोटा हमें देखिथिले कोठी तुम कहि दोची को जगहटा एठी जो पॉइंट हमें देखिथिले कोठी होची ना तुमरो subcutaneous filariasis. सेइतरे कोन होइसिला कोन लिखितला? In this case the bottom layer of the skin and white part of the eye are infected by the worm. तो white part रे कोडा जाउची कि सेई पार्ट टा जाउची परा. तेडो एटा तुम infected हबो हैला.
जोटा कही तुमको कर्निया कॉरॉइड रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व फाइनली रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ विजन से कर्नियाटा एफेक्ट हो तापर धीरे धीरे भितर पशिବ कॉरॉइड रेटिना भितर रहा तार ऑप्टिक नर्व्स है कि फाइनली रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ विजन आखि फुटीज पूरा तेणु एमती भी हुए हाइपर और हाइपोपिगमेंटेड स्किन ऑन द फेस आर्म्स पिगमेंटेशन हम स्किन रे दाग पड़ो फीट एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इफ द सिम्पटम्स आर नेग्लेक्टेड द फाइनल स्टेज ऑफ दिस डिजीज वुड रिजल्ट इन ग्रॉस एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्स एंड जेनिटालिया इन ए कंडीशन कॉल्ड एलिफेंटिसिस जोटा हम कहते गोदर गोड़ है तुम देखी एलिफेंटिसिस से सब पूरा गोड़ फुली बहुत जोरे तेणु फाइलेरियासिस डायग्नोसिस केमती हम ना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डायग्नोज दिस डिजीज एज द सिम्पटम्स भैरी फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप सिम्पटम भैरी करे तेणु डायग्नोज करने बहुत कष्ट and the symptoms diagnosed in the early stage are similar to normal viral and bacterial infection तो तुम जानी परिबनी तुम भाई बैक्टेरियल इन्फेक्शन है कि however there are a few diagnostic process carried out through body analysis physical examination करिया पड़ो देखिया पड़ो डाक्टर ऑब्जर्व करेंगे बॉडी फ्लूइड टेस्ट करेंगे इंक्लूडिंग ए ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट few blood tests are carried out during the night time as the larvae are found most active at night तुम ब्लड टेस्ट केतବେଳେ कराजिवो ना राति रे कराजिवो फाइलेरिया टेस्ट सदाळे राति रे ब्लड टेस्ट हो काहे कि से लार्भा गुड़ा राति टाइम रे तुम बॉडी भितर तुम क्यारिड आउट ड्यूरिंग द नाइट टाइम एज द लार्भा आर फाउंड मोस्ट एक्टिव तेणु ये लार्भा गुड़ा तुम राति टाइम बेसी एक्टिव था बुझिपार तो फाइलेरिया पेसेंट रे कहीं राति रे ब्लड टेस्ट करा परीक्षा क्वेश्चन पड़ुची कारण से लार्भा गुड़ा एक्टिव था राति A popular diagnostic procedure involves blood being drawn from a larger vein and smeared on a glass slide. The slide is then examined under an electron microscope to check for the presence of parasitic larvae around them. The presence of filariasis is examined with the help of the Giemsa stain. Giemsa stain use करा जाए. The other diagnostic for subcutaneous filariasis is performed with a skin snip test. Skin snip करके मध्य देखा जिवो. अच्छा treatment for filariasis. Filariasis पे कौन treatment? Currently there is no vaccine available for filariasis. कौन सा injection बाहर नहीं. Scientists are still working on developing a cure for filariasis. Prevention is better than cure. एटा हमें सदाबले जानचे prevention is better than cure. तेणु as well as we all know this disease is caused by the bite of mosquito. तेणु it is better to prevent the cause of this disease by wearing long sleeves and pants to prevent the bite of mosquito. मशा न कामुड़े पे पूरा फुल हाथ फुल गोड़ माने जेन गोड़ हाथ कवर होगी रहथो पैंट शर्ट पिंधिबो. Applying DEET based insect repellent. Preventing the build-up of stagnant water जैसे पानी कोटी जमीबनी से कथा ध्यान दब using mosquito mat coils and nets if possible though scientifically unproven dark color clothing attract mosquito so it might be beneficial to avoid them है तेणु गोटे जिनस से कहूँ जदियो scientifically unproven तथापि dark colored clothing attracts mosquito so it might be beneficial to avoid them तेणु तुम dark color clothing avoid करा से कहूँ डार्क से मैंने अंधार मैंने बसिले जना पड़ोनी से बोधे कहुच्छी कहूँ तेणु लाइट कलर पिंधिले मस्किटो बसबेनि बेसी तुम देहरे तेणु यहाँ साइंटिफिकली प्रूवेन नुहे ये लिखाई गोटे तेणु इनस्पाइट ऑफ ऑल दिस मेजर्स इफ फाइलेरियासिस इज कॉन्ट्रैक्टेड द बेस्ट ट्रीटमेंट वुड बी ए कोर्स ऑफ एंथेलमिंथिक ड्रग्स और एंटीबायोटिक एंथेलमिंथिक वुड बी द बेस्ट ऑप्शन एज इट डायरेक्टली किल्स द वर्म्स है तेणु एंथेलमिंथिक बढ़िया सब but if this is not feasible antibiotics are a great alternative because they target the symbiotic bacteria that are present inside the worms when the antibiotics kill this bacteria the worms cannot survive and thrive inside their host eventually hampering reproduction so last conclusion kon कहला the parasitic roundworms belong to the family of Filariidae and the phylum Nematoda so this particular species is known by the name filarial worms or filari and the infection caused by them is called filariasis. The general symptoms of filariasis includes fever, ज्वर हबो, कंप हबो, मुंड बिंधि हबो, स्किन लेसन ए चारटा जिंस मन रखिले तो कोन कोन फीवर, चिल्स, हेडेक आउट होची स्किन लेसन ए चारटा सिम्पटम देखा जिवो. तेणु फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज विल डिसफिगर द पेशेंट विथ एक्सेसिव स्वेलिंग एटा आउट पांचटा जिंस ऐड होची कोन डिसफिगर ऑफ तुम फिजिकल डिफॉर्मिटी आसो जोटा कि देखो गोड़ फुली जाऊँ गोटे एब्नॉर्मल गोटे गोड़ नॉर्मल थी गोटे गोड़ फुली जाइए से कहूचे एलिफेंटाइसिस.